Let us look at another example for place of effective management for companies which are engaged in active business outside India. EFCO is a wholly owned subsidiary of ICO. So let's say there is a company ICO. It has a wholly owned subsidiary EFCO. Parent company ICO laid down principles of supply chain functions. Such principles are laid down for the entire group of companies. So the parent company has laid down certain policies in relation to the supply chain functions for the entire group of companies. It's not only specific for EFCO, but for the entire group there are certain policies which have been laid down. The board of directors of EFCO follow such principle of supply chain functions. They do not object to it. They are assuming them as given. इस केस में आईको ने, जो कि पेरेंट कंपनी है, कुछ पॉलिसीज लिख रखी हैं रिलेटिंग टू सप्लाई चेन फंक्शन. जिसकी सब्सिडरी है एफको, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन पॉलिसीज को फॉलो करता है बिना किसी वेरिएशन के. वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एफको आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. इशू ये है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑफ मैनेजमेंट? Because if they are not, then the EFCO will be treated as having the place of effective management in India and will become a tax resident of India. Now, one of the rules or one of the exception to this is that the general rule is wherever the board of directors take the decision, majority of them, that's where the place of effective management is. If the board of directors do not exercise their power of management, then it is either with the holding company, or if the person who are taking this decision, they are in India, then it is treated as being in India. But there is an exception to this rule. If the board of directors follow the policy laid down by the parent company for the entire group of companies, then in that case, the POEM shall not be treated as being in India. And that is what our solution will also tell us. The POEM of EFCO will be outside India. Why? The fact that the board of directors are following general and objective principle of global policy laid down by the Indian parent company would not imply that they are not exercising their powers of management. Actually, the word exercising is missing from this slide, right? Now let us look at the POEM for the companies which are not engaged in active business outside India. In case of companies which are not engaged in active business outside India, the determination of POEM will be a two-stage process. अगर आप इंडिया में एक्टिव बिजनेस अगर आप इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस कर रहे होते तब एक अलग सेट ऑफ रूल्स था. बट अगर आप इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस नहीं कर रहे हैं तब पोएम डिटरमिन करना एक टू स्टेज प्रोसेस है. पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल. Suppose there is an Indian company and it has a subsidiary outside India, Alpha Inc. हमें ये देखना है कि Alpha Inc. का पोएम कहाँ पर है. मान लीजिए हमारा assumption ये है कि Alpha Inc. is not engaged in active business outside India. ये डिसाइड करने के लिए पहली चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि वो कौन लोग हैं जो एक्चुअली में की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं अल्फा इंक के, जिसके थ्रू जो कंपनी का बिजनेस है वो कंडक्ट हो रहा है. वंस यू फाइंड आउट हु द पीपल आर, देन यू नीड टू फाइंड आउट इन द सेकेंड स्टेज, डिटर्मिन द प्लेस वेयर दीज डिसीजन आर इन फैक्ट बीइंग मेड. मतलब
एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डिसीजन मेकर कौन है, सेकेंड चीज़ क्या है, आप ये देखिए कि वो जगह कौन सी है, विच इज़ द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर बीइंग मेड। इफ दैट प्लेस इज इन इंडिया और इज दैट प्लेस आउटसाइड इंडिया। Obviously, if it is in India, the poem is in India. The poem of the foreign company would be outside India, where key management and commercial decisions are taken outside India. अगर इंडिया के बाहर की मैनेजमेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं तो पोएम भी इंडिया के बाहर होगी। The place where the management and commercial decisions are taken would be more important than the place where such decisions are implemented. मतलब अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हमारी इंडियन कंपनी या कोई और इंडिया में जो था वो डिसीजन ले रहा था, सो द डिसीजंस हैव बीन टेकन इन इंडिया, बट ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहे हैं, अल्फा इंक की कंट्री में। इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के बाहर है, डिसीजन मेकिंग इंडिया में है। इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर आपको इस बुलेट में दिया है, विच इज दैट द प्लेस वेयर डिसीजन आर टेकन विच इज इंडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। भले ये डिसीजन इम्प्लीमेंट इंडिया के बाहर हो रहे हो, अगर इंडिया में डिसीजन लिया गया है देन दिस विल बी ट्रीटेड दैट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन India. Let us look at an example on this. EFCO held the board meeting in USA, wherein board of directors of EFCO agreed to sign the sale contract. USA में डिसीजन हुआ, प्लेस कहाँ पर है, USA में। However, the contract of sale was signed in India. डिसीजन यहाँ हुआ, साइन इंडिया में हुआ, वेदर पोएम ऑफ एफको वुड बी आउटसाइड इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू साइन द सेल कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया, दस द की मैनेजमेंट डिसीजन वॉज टेकन आउटसाइड इंडिया। ये तो क्लियर है कि डिसीजन हैज बीन टेकन आउटसाइड इंडिया, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइंड द सेल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, thus the key management decision is implemented in India. Implement India में हुआ है। Poem of EFCO would be outside India as the place where these management decisions are taken is more important than the place where such decisions are implemented. यानी अगर डिसीजन इंडिया के बाहर हुआ है, पोएम वहाँ पर होगी, इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, that is not important.